Hello students. Today we will discuss about the topic named measurements and experimentations. So let's start. It is a ICSE grade 9 topic. Start doing start reading the topic. First is what is measurement? What do you mean by measurement? Measurement क्या है बच्चों? Measurement is the process of comparing an unknown physical quantities with the known standard quantities unit. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आ, कोई अननोन क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करें, करके कुछ चीज़ को मेज़र करें, तो उसको हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। जैसे कि से एग्जांपल, लेंथ इज़ 5 मीटर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है कि कोई लेंथ है जो 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर है। सिमिलरली अगर हमसे कोई मुझसे पूछे कि मास 10 kg, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई एक मास से, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 10 टाइम्स ऑफ 1 kg। सिमिलरली अगर कोई पूछे आपको कि टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 20 टाइम्स 1 सेकेंड है। हाँ, 1 सेकेंड का 20 टाइम्स है। ऐसे ही हम लोग मेजरमेंट को यूज करते हैं। नाउ से व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट? मेजरमेंट हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मेजरमेंट के, अगर हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट हुआ तो हम लोग उसे यूज कर सकते हैं कहाँ पे? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, टू मेक एक्यूरेटली। लाइक you are doing a scientific experiment of hydrogen and oxygen. You are mixing hydrogen and oxygen in presence of sparking, and it become H2O, that means water ना। now ये जो वाटर है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हम बैलेंस कर लेते हैं, हमें चाहिए two two molecule of hydrogen and one molecule of oxygen. Now if हम लोग इसका वेट मेजर कर सके तो हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एकदम एक्यूरेट होगा। नाउ कंपेयर फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है एंड उसका बोले कि कौन सा ज़्यादा हैवी है, आप कैसे उसे मेजर कर सकते हैं? आप उसको लाइक आप उसका वेट मेजर करके, लाइक 1 kg, 2 kg, 3 kg, एंड उसको कंपेयर करके, लाइक से ए हो गया आपका 4 kg और ए हो गया 3 kg। सो which one is heavier? We can measure it correctly. Now go to the next topic, like to design engineering structure. Like engineering structure like bridge, like our houses, there we need different type of uh, iron rods, no? And different types of iron rods, their thickness should be measured, their length should be measured by, that's why we need measurement. Manufacturer of machine, like हमें रेगुलर काम करने के लिए क्या करना चाहिए? मशीन को यूज करना पड़ता है। तो ये मशीन जो है, इसको कोई अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करना चाहे तो हमें मेजरमेंट बहुत ज़रूरत है। नाउ क्या है? नेक्स्ट है कंडक्ट मेडिकल टेस्ट। लाइक इन मेडिकल टेस्ट हमें डिफरेंट टाइप का मेडिसिन यूज करते हैं। अब उस मेडिसिन को कितना ज़्यादा मेडिसिन होगा, लाइक हम लोग सिरप पीते हैं, तो उस सिरप में कितना चम्मच सिरप होगा, कितना ml सिरप होगा, वो हमको चाहिए। हम बोल सकते हैं मेजरमेंट से। सिमिलरली आप इसे यूज कर सकते हैं
कम्युनिकेट साइंटिफिक रिजल्ट वर्ल्ड वाइड। लाइक आप एक साइंटिफिक रिसर्च किए, वहाँ पे आपको कुछ एमजी का मेडिसिन यूज हुआ, सो वो आप वर्ल्ड वाइड में सबको बता सकते हैं बाय यूजिंग दैट। मुझे 100 मिलीग्राम ऑफ दिस मेडिसिन को यूज करना पड़ा, जिससे ये डिजीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ताकि हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी में सब लोग उसे यूज कर सके। नाउ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसके बाद हमें जानना पड़ेगा क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो थिंग है, लाइक एनी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइक हम जिसको मेजरेबल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो है कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू के न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट। कुछ एग्जांपल, लाइक यहाँ पे जो पहले जो एग्जांपल्स लिए थे हम लोग, यही एग्जांपल आप डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। 5 मीटर, 5 मीटर का मतलब क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 और ये है 1 मीटर, यूनिट है मीटर। लाइक जैसे मैंने बोला 5 मीटर का मतलब क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। आप फिर से 10 kg का मतलब क्या होगा, 10 kg का मतलब होगा 10 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम। 20 सेकेंड का मतलब क्या होगा, 20 सेकेंड का मतलब होगा 20 टाइम्स ऑफ सेकेंड, 20 टाइम्स ऑफ 1 सेकेंड। ओके, नाउ here characteristics of a good unit, a good कोई यूनिट को गुड होने के लिए, लाइक इजीली एक्सेप्टेबल होने के लिए क्या है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। फर्स्ट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो क्या, ए वेल डिफाइंड होगा। मतलब हम इसे इजी से बोल सकते हैं, लाइक इन व्हेन डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है, वहाँ पे वो बोल देता है कि 100 ml ऑफ this syrup we have to drink. So here, instead of if he said like you need to eat it 1 chamach daily. 1 chamach can be different for different people, but 100 ml will be the same. There will be a there we have a cap, na. On the cap of the syrup bottle there is some measurement line, we can measure 100 ml easily. Now एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट होगा का मतलब क्या है, अगर अब वेदर चेंज हुआ या फिर कहीं दूर आप चला गए, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप कोई नया चीज यूज किए, वहाँ पे भी ये नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, बिकॉज 100 ml ऑलवेज भी 100 ml, though easily reproducible, we can reproduce it easily. Like if we take this 100 ml of medicine to a cup and mark the cup that it is 100 ml, बस हो गया। ये नया नया मेजरिंग डिवाइस हमारे पास हो गया, सो ये इजीली रिप्रोड्यूसिबल है। देन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सली मतलब सारे विश्व में ये एक्सेप्टेबल होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, दैट मीन्स प्लेस टाइम मतलब यहाँ पे भी जो होगा अमेरिका में भी होगा और अर्जेंटीना में भी द सेम थिंग। नाउ द टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज जो है फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, जिसे हम मेजर कर सके। नाउ इस मेजरमेंट का ऊपर बेस करके फिजिकल क्वांटिटी को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब जिसको मेजर करने के लिए हमें दूसरे चीज का कोई जरूरत नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इस विश्व में देयर
we have around seven fundamental quantities. These three is are more important, like length, mass, and time, and there are other four that are called temperature, electrical current, amount of substance, and luminous intensity. नाउ यहाँ पे एक चीज हमको गौर करना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल करंट इज फंडामेंटल यूनिट बट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नॉट. Okay, electrical charge is not a fundamental quantity. Now, what is derived quantity? Derived quantity, these are obtained by combining fundamental quantities. We fundamental quantities को तोड़ मरोड़ के हम लोग derived quantity मतलब तैयार कर सकते हैं. जैसे कि और एरिया का मतलब क्या है? एरिया का मतलब है लेंथ टाइम्स ब्रेथ. सो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर. इसका यूनिट क्या है? मीटर. सो इट विल बी मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट. दैट मीन्स मीटर टाइम्स मीटर, दैट इज मीटर क्यूब. स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम. डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है मीटर and time ka unit is second, so we can say meter per second. Similarly, we can find the units of other quantities also. Now यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल ऐसा यूनिट को डिनोट किया है यहाँ पे धीरे धीरे करके. जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. मास का क्या होता है? किलोमीटर. टाइम का सेकेंड. टेम्परेचर का केल्विन. लुक, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन, बट के इज स्मॉल नॉट कैपिटल. बट व्हेन वी आर राइट Kelvin, this K become capital. Now, electric current, ampere, amount of substance is small, luminous intensity, its unit is candela, its SI unit is candela. The amount of substance, mole. This part is very important for exam because here mostly they ask the unit of temperature, SI unit of temperature, SI unit of electrical current, even luminous intensity in always in the exam. Now there are some derived quantities, and now we will learn about their units. Like for area, as I told you, it will be meter square. Why? Because it is length times what? Length times breadth. Volume, length times breadth times height. Na? Similarly, for speed means distance by time. For distance, it is mass distance. Sorry, distance unit is not meter by second. So that's why we can write it as this way: meter per second, or we can write it meter second inverse. Acceleration, it is change in speed by time. So speed by time, if we do the math, it will be meter per second square or meter second in to the power minus 2. Force, SI unit is Newton. Newton, N will be capital. Look here, the symbol of only this thing is capital. Similarly, pressure's unit is Pascal. It will be capital P, small m. Now we will read about सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मतलब यूनिट जो होता है उसका हम लोग कैसे डिनोट करते हैं. पहले हम लोग थ्री यूनिट यूज करते थे. तो वो क्या क्या है? वो है CGS unit, APS unit, and MKS unit. CGS unit क्या है? CGS. Look, we have what? CGS. Another
we have FPS and MKS. So फर्स्ट जो हम लोग लेते हैं ओवर लेंथ. फॉर लेंथ इन CGS unit will be centimeter. FPS it will be foot. MKS it will be meter. Now second is mass. For mass CGS unit is gram. FPS unit is pound and MKS unit is kilogram. Last is time. For time in all of them it is second. Its unit becomes second. That's why they have total 3 unit. Three system of unit. Good. Three system of unit. But nowadays we use SI system. SI system means a standard system used throughout the world. Here we use some SI prefix. SI prefix means like for like if you have gram, you can write kilogram in this way. Kilo is prefix here. Then megagram or gigagram in this way. Milligram, microgram, nanogram. Even for meter, kilometer, megameter, gigameter, centimeter, millimeter, micrometer, nanometer. And what is the symbol of kilo? Kilo symbol is small k and value is 10 to the power 3. Mega, mega means big, that's why capital M, 10 to the power 6. Giga, capital G, 10 to the power 9. Centi, small c, 10 to the power minus 2. Milli, small m. Milli, for milli, it is a small m because it is small and 10 to the power minus 3. Micro it is called mu. Mu and 10 to the power minus 6. Nano, small n, 10 to the power minus 9 is value is. Now, units of length, there are some units of length. First is millimeter, centimeter and meter. These are small units and large unit is kilometer. And these four are like our metric unit system. Within metric unit system, that means uh, like from meter we can find them easily. Now in astronomy we use some other units like astronomical unit, light year, and another is Pascal. What do you mean by astronomical unit? Astronomical unit means distance between sun and earth. But now earth move in an elliptical orbit around sun. That's why here we will write average distance between earth and sun. What is light year? Light year is an unit of distance. It is an unit of distance. It means the distance traveled by light in 1 year. So it will be distance, it will be speed by speed into time. If we put the value of speed and the value of time in second, we can find how much meter it is. It is a homework, you will do it. We know that, I give you a hint also. We know that speed of light is 3 into 10 to the power 8 and time is 1 year. 1 year means 365 days. 1 day means 24 hour. 24 hour means 60 seconds. 60 second and 1 second means, look, 1 day means 24 hours. 24 hours, 1 hour means 60 seconds. 60 minutes, 60 minute means 60 minutes. There 1 minute means 60 seconds.
That's why we need to multiply all of them and multiply it with the speed. You will get the answer of it. Now, parsec. What is parsec? Parsec is an astronomical unit, like very big unit. Like you are very far away of our solar system, from where you are observing our Earth and Sun. How can you see Earth and Sun? Say there is Sun, there is Earth. Now, Earth and Sun are separated by an distance, but here we will consider Earth and Sun is separated by an angular distance. When this angular distance is become 1 second, in that case the distance between the observer and the Earth is 1 parsec. Okay. Now we will learn about some important conversions, like 1 kilometer means how many meter? 1,000 meter. Good. 1 meter means how many centimeter? 100. 1 centimeter means 10 millimeter, and these are the new one. 1 millimeter means 10,000 micrometer, and 1 micrometer means 1,000 nanometer. Now it's some units of mass, like kilometer, kilogram, gram, and milligram. Other units are metric ton, quintal, and atomic mass unit. Here are some important conversions. You will read it. Now, units of time. What are the units of time? There are common units. Some common unit we have that are second, minute, hour, day, month, year, and leap year. And there are some important conversion. They are very important, and we know that. Here we have some important derived quantities. What are the derived quantities? Like density. Density means mass by volume. For mass, it is 1 kg. For volume, it is meter cube. So, SI unit is kg per meter cube. Speed, distance by time. Similarly, acceleration, change in velocity. For velocity, we have meter per second divided by time is another second. So that means meter per second square. It's SI unit. Force, mass into acceleration, we generally use Newton. And pressure, force per unit area, we generally use Pascal. Momentum is mass into velocity, that is for mass it is kg, for velocity it is meter per second. So its SI unit is kg meter per second. Work is force into distance, that is joule. And power is work upon time, work per unit time basically. That's why its SI unit is watt. Frequency means number of vibration per second, so its SI unit is hertz, or sometimes we can use second inverse also. Now, electrical charge, its SI unit we generally use coulomb, capital C. Look, we sometimes we use capital, sometimes we use small. Why? Because we need to follow the rule of writing units of symbol. First is, we generally use a small letter unless the name after scientist. Look, meter, second, mole, kg, all of them are in small letter. But A is in capital. Why? Because it is based on the name of the scientist called Ampere. Na? Now, named after scientists, these are the units that are the named after scientists, like Newton,
Joule, ampere, Pascal, watt, Kelvin, all of them are named after scientists. That's why when we write in short or write in symbol, they will be capital. Other rule: do not use plural forms. Like we cannot write kgs. Kgs means not kgs. Like it is not. It is incorrect. We need to write 5 kg. Enough. Never put stops after unit symbol, like 5 kg. We cannot write 5 kg then dot, like 5 kg of mass, so we need to write 5 kg of mass. In this way, need not to write this decimal point. Only one prefix should be used. That means we can use mm means millimeter, but we cannot write mmm, that means millimeter. It is not possible. Here we have some examples, you can follow these examples. And here you can follow these short questions, like most important definitions, and then you will try these questions in your home. Okay. Okay, that's all for today. Have a good day. Bye.